Good afternoon, dear students. Hope you all are doing well and hope you all had a great festive season. So, here we are again, another time with another interesting module. और आज आपका सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है और आज जो पढ़ाएंगे वो हैं आपके डॉक्टर शोएब हसन सर जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाएंगे. Your second module has various concepts, various very interesting, very nice concepts जो आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेगा. एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस. हमने देखिए इमोशन सुना है कि इमोशंस क्या होते हैं, हमारी भावनाएं ना. इंटेलिजेंस क्या होता है ना. लेकिन ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ना. तो दैट विल बी लर्निंग फ्रॉम सर एंड आई एम श्योर दैट इट वुड बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी एनलाइटनिंग लेसन. और आगे जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी इट वुड बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो आई वुड जस्ट बी हैंडिंग इट ओवर टू डॉक्टर शोएब हसन. Just a moment, students. Good afternoon, students. I am Dr. Shoaib Hassan from Department of Humanities and Social Sciences. Now we are discuss about emotional intelligence today. Let's start. What is emotional intelligence? First of all, I think we know about Model 2. We should know about Model 2. Let's introduce Model 2. First of all, we will discuss about meaning of emotional intelligence. What is emotional intelligence and components of emotional intelligence? Why it is important for us. Then we will discuss positive and negative emotions and healthy and unhealthy expression of emotions. Then relevance of emotional intelligence at workplace. And lastly, we will discuss about self-assessment, analysis, and action plan. So, dear students, we should start Model 2, Emotional Intelligence. Mayer and Solovey and Crusoe explain that emotional intelligence is the ability to perceive and express emotion, assimilate emotion in thought, understand and reason with emotion, and regulate emotion in self and others. And second definition is our ability to recognize and understand emotions in ourselves and others, and our ability to use this awareness to manage our behavior and relationships. That means इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे लिए खुद के लिए नहीं है, बल्कि ये दूसरों के इमोशंस को भी समझने के लिए और उनको मैनेज करने की एक एबिलिटी है, एक योग्यता है. जैसे कि इमोशंस हम जानते हैं, बेसिकली इमोशंस फियर एक्सेट्रा जो होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस उनसे थोड़ी आगे की चीज़ है, जो कि एक स्पेशल एबिलिटी है हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, खुद के इमोशंस को पहचानने के लिए और
एज वेल एज दूसरों के इमोशंस को भी समझने और मैनेज करने के ये एक योग्यता है, आई थिंक। एंड जो डिफिनेशंस है इमोशनल इंटेलिजेंस की, डिफरेंट डिफरेंट डिफिनेशंस हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस आपको बताता हूँ, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली एक्सप्रेस one's own emotions, as well as the capacity to effectively interact with others by understanding and managing their emotions. It plays a significant role in personal and professional relationships, decision making processes, and overall mental well being. What is the characteristics? Now we will discuss about characteristics. The first is empathetic response, actively listening and offering comfort when a friend shares about a loss. It is the characteristics of emotional intelligence. कि हम एक्टिवली लिसनिंग करें और दूसरों की बातों को अच्छे से समझें और फिर अपना रिस्पॉन्स दें। सेकेंड इज सेल्फ अवेयरनेस इन स्ट्रेस, breaking tasks into pieces when recognizing anxiety from tight deadlines. And third is motivation regulation, setting small goals to maintain enthusiasm for a long term project. And now we will discuss about why emotional intelligence is important. Because emotional intelligence helps individuals in their strive for success in living, working, learning, and social interaction with self and others. Because we are social being, so we interact each other. Therefore, we need to strong our emotions, control our emotions. Then, emotional intelligence help us for these works. Another, emotional intelligence can help a person work with and supervise other people. It can also help them to cope with and be more resilient to stresses that they might face in life. जो डे टू डे स्ट्रेस हैं, जो डे टू डे हमारे वर्किंग लाइफ स्टाइल हैं, उनमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी कारगर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हम डेली किसी न किसी स्ट्रेस से दो चार होते रहते हैं। सुबह मॉर्निंग से लेट नाइट तक हमारे पास जो भी वर्क होते हैं, जो भी काम होते हैं, हम कहीं न कहीं उनसे स्ट्रेस फ़ील कर ही लेते हैं, ना चाहते हुए भी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें उससे कोप करने की, उस स्ट्रेस से लड़ने की, उसको कम करने की एक योग्यता है, बताता है। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, तो हम जल्दी कोप कर पाते हैं, अदरवाइज़ स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। One research shows that emotional intelligence is the strongest predictor of workplace performance. ये सिर्फ अपने और दो चार जो हम स्ट्रेस से कोप होते हैं या जो डे टू डे लाइफ है, सिर्फ इसके लिए ही नहीं, बल्कि वर्क प्लेस पर भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने ज़्यादातर चीज़ें देखा होगा कि जो भी सेल्स के जैसे बंदे हों या एज ए टीचिंग, हमें अपने इमोशंस को काफ़ी जगह कंट्रोल करना पड़ता है। हमें काफ़ी इंटरेक्शन के लिए एक इमोशंस को जो है कंट्रोल करके रखना पड़ता है। बिकॉज हम सोशल वेल बीइंग हैं, तो सोशल बीइंग हैं तो हमें दो चार लोगों से डे टू डे मिलना होता है, उनके साथ काम करना होता है। तो वर्क प्लेस पर भी इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है, हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर इसको देखा गया है रिसर्चेज में। 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स हैव हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। जो भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनका ये देखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है। उस इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से ही वो एक अच्छे परफॉर्मेंस दे पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो रिलेशंस हैं, उनमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, हमारे रिलेशन बिल्डअप में या रिलेशन को मेंटेन रखने में। People with average IQs outperform those with the highest IQ 70% of time. सिर्फ IQ ही होना इम्पोर्टेंट नहीं है, IQ के साथ साथ
इमोशनल इंटेलिजेंस या जिसे ईक्यू भी हम कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे डे टू डे लाइफ में, बल्कि हर जगह। अगर ये कहा जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस हर जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, because it's a important things. Decades of research now point of emotional intelligence as being the critical factor that sets star performers apart from the rest of the pack. काफ़ी रिसर्चेज हैं जो इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को डिनोट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। आगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आईक्यू वर्सेस ईक्यू। एक सिंपल सी बात हमारे जहन में आती है कि आईक्यू तो हम सब एक दूसरे से सुने होंगे या जानते होंगे, जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर वो जानते होंगे, बल्कि एक कॉमन आदमी भी आईक्यू के संदर्भ में वो जानता है कि हाँ, दिस आईक्यू इज़ ए इमोशनल इंटेलिजेंस। देन we will discuss about IQ versus EQ. Daniel Goleman, who is the famous name for emotional intelligence, was first published in 1995. The book, which promoted the concept that emotional intelligence was more important than natural intelligence in determining success in life, sold 5 million copies in the first 5 years of publication. So, guys, what is IQ? IQ is the ability to cognitive, intellectual, logical, analytical, and rational abilities. Otherwise, while EQ is the emotional, social, communicative, and relational abilities. IQ is a personal information bank, just like memory, vocabulary, etc. जबकि EQ is a grasping own as well as others' wants and needs. Same gauges how will one acquire and organize new knowledge. Gauges means measurement. हम कितना मेजर कर पा आईक्यू को हम मेजर कर सकते हैं. हाउ विल वन एक्वायर्स एंड ऑर्गेनाइज न्यू नॉलेज, while gauges how will one copes with environmental demands and pressures. Next is components of emotional intelligence. Now we will discuss about 5 more components of emotional intelligence, which is given by Daniel Goleman. These are self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills. First, self-awareness. Self-awareness is an important part of emotional intelligence. It is a level of understanding and self-awareness of a person's own emotions. Self-awareness is a foundational skill. When you have it, self-awareness makes the other emotional intelligence skills much easier to use. As your self-awareness increases, so does your satisfaction with life. An important part of being self-aware is knowing your strengths. I repeat, an important part of being self aware is knowing your strengths. Research shows that successful people know their own strengths, use them to their fullest extent, and know how they impact other people. An individual with high emotional intelligence is not only aware of what emotions they are feeling, but can put words to their feelings. They can also understand the consequences of their emotions and how they may change and shift over time. Strategies to develop self awareness. Some important strategies then develop who can develop our self awareness. That is, observe the ripple effect from your emotions, visit your values, check yourself, know who and what pushes your buttons. Stop and ask yourself why you do the things you do and seek feedback.
If you have high scores on self awareness, then you will be able to see yourself as others see you, have a good sense of your abilities, like realistic self assessment, know your limitations, and you are self confident. And the second is self regulation, it's also called self management. Once a person has achieved the first component, they can move on to self regulation or self management. An individual with a good awareness of their own emotions can better manage the emotions and behaviors that come along with them. This may involve noticing a difficult emotion and slowing down or resisting any impulsive action that may follow. Self management is what happens when you act. We can say that self management is what happens when you act or do not act. Success comes to those who can put their needs to hold and continually manage their tendencies. Self awareness या self management is a very important for our success. अगर हम खुद की चीज़ों को हम मैनेज कर पाते हैं तो हम हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Self management, self management is a self control, trustworthiness, conscientious adaptability, achievement orientation, initiative. Why is self management important? Let's discuss. Self management is what happens. It is the ability to stay focused and think clearly when you have powerful emotions, thinks before acting, and controls or redirects destructive impulses and moods. It's the ability to suspend judgments. If a guys, if a person which score high on self-regulation, then it is able to manage own emotional state, does not easily panic, takes responsibility for actions. यानी अगर आप सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट में हाई स्कोर ऑब्टेन करते हैं तो आप इमोशनल स्टेट मैनेज करने में अच्छे होंगे. आप आसानी से पैनिक नहीं होंगे. दैट्स मीन्स आप आसानी से गुस्सा नहीं करेंगे. यू आर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस. आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे. एंड यू डू नॉट मेक हेस्टी डिसीजन दैट यू माइट लेटर रिग्रेट. आप कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे जो जिनके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े या रिग्रेट फील हो. यू आर ओपन टू चेंज एंड अडेप्टेबल पर्सन एंड यू आर ऑल्सो ट्रस्टवर्थी. Some strategies to develop self-management. We can take control of your self-talk. हम अपने सेल्फ टॉक पर कंट्रोल कर सकते हैं. ज़्यादा गुस्सा आने पर या चीज़ों को ना समझ पाने पर काउंट टू 10 हम काउंटिंग कर सकते हैं. स्माइल एंड लाफ मोर. स्माइली फेसेस एंड हंसना, as we know that laughing is very better for us. So it's also a coping strategy. Then learn a valuable lesson from everyone you encounter. Counters control self-talk and eliminate antis, that means automatic negative thoughts. विरले ऐसे पर्सन्स होंगे जिनको नेगेटिव थॉट्स ना आती हो. हम सब नेगेटिव थॉट्स से परिचित हैं. कभी कभी या कभी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी. तो हमें इन्हें एलिमिनेट करना है. इन चीज़ों से थोड़ा बचना है. एंड वर्क ऑन नॉट ब्लेमिंग अदर्स. वर्क ऑन नॉट ब्लेमिंग अदर्स. किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, चाहे वो पर्सनल फैमिली पर हो या वर्क पर हो, खास करके वर्क के मामले में. एंड फाइंड अदर्स टू लर्न फ्रॉम. दूसरों से सीखने की कोशिश करना है. जब हम दूसरों से सीखते हैं तो हमें डे टू डे हम अपने अपडेट होते रहते हैं. हम अपनी चीज़ों को सही करते रहते हैं. हमारे अंदर खुद ब खुद सुधार आता है. देन
We will discuss about third part of four elements, that is motivation. Motivation is the process that stimulates and directs someone towards achieving their goals. It is a key part of emotional intelligence. Motivation allows a person to remain true to their goals and persevere even during challenging times. A person with low motivation may be discouraged easily by any obstacles and give up. अगर हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है तो हम जल्दी ही उदास हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, हम होने वाले काम को भी नहीं कर पाते हैं. तो इट्स ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस. A person with high motivation realizes that the reward of their personal goal is worth the time and effort spent getting there even when they face obstacles. जो भी पर्सन्स या जो भी व्यक्ति मोटिवेशनल होता है, हाईली मोटिवेशन होता है या जिसके अंदर मोटिवेशन होता है, वह उन कठिन परिस्थितियों में भी अपना गोल अचीव कर लेता है जहां गोल को पाना असंभव सा लगता है, नामुमकिन लगता है. तो मोटिवेशन इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर because it is ability to use your deepest emotions to move and guide you towards your goals. It has a passion to work for reasons other than money or status. If you scored high, if you obtained high scores in motivation, then you are able to take initiative, perseverance in the face of obstacles and setbacks. You are goal oriented and optimistic, and you are also loyal. Preserve in the face of obstacles and setbacks means continue ready to face problems and delays. यू आर कंटिन्यू, आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, आप उसमें लगे रहते हैं. जैसे कहते हैं कि हम किसी चीज़ को अगर उसमें हम लगे रहते हैं तो एक न एक दिन हमें कामयाबी मिल जाती है. तो दैट इज प्रिजर्व्स इन द फेस ऑफ ऑब्स्टिकल एंड सेटबैक्स. सम स्ट्रेटजीज टू डेवलप मोटिवेशन. फर्स्टली प्रैक्टिस बीइंग पॉजिटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें करना है वो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना है. कभी भी निगेटिव नहीं होना है, चाहे परिस्थितियाँ कितने भी विषम हो, निगेटिव हो, सिचुएशन जो भी हो, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है. एंड सेट स्मार्ट गोल्स फॉर योरसेल्फ. और अपने लिए एक स्मार्ट गोल सेट करना है जिसको हम पाना चाहते हैं. उसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ करना है. गोल को अचीव करने के लिए लगातार कंटिन्यू हमें वर्क करना है. एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक इनिशिएटिव. और उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखते रहना है, उनको भी जाने नहीं देना है जो हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होंगी. तो दीज आर द स्ट्रेटजीज टू डेवलप मोटिवेशन. एंड फोर्थ कंपोनेंट इज एम्पैथी. Empathy refers to how tuned to the emotions of others a person is. Someone with high emotional intelligence can accurately identify with emotions, which emotions another person is feeling, and can tell the difference between genuine and false emotions. It is the ability to sense. Empathy is the ability to sense, understand, and respond to what other people are feeling. जनरल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इमोशन है जिससे हम दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं. इसका एक एग्जांपल ये दे सकते हैं कि अपनी सिचुएशन, दूसरे की सिचुएशंस को अपने ऊपर रख के देखना. दिस कॉल्ड एम्पैथी. इट रिक्वायर्स level of self-awareness. That means awareness of your emotions allowed to your read emotions of others. Someone with high emotional intelligence can accurately identify which emotions another person is feeling and can tell the difference between genuine and false emotions. अगर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है तो हम दूसरे के संवेगों को, इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर पाते हैं. A person may do this
by noticing certain facial expression or changes in another person's voice or body language. Empathy is also is the ability to sense, understand, and respond to what other people are feeling. In a short way, we can say that it is the ability to sense, understand, and respond to what other people are feeling. It requires level of self-awareness, awareness of your emotions, allow you to read emotions of others. If you obtained high scores, then you are able to sensitive to others. आप दूसरों के प्रति काफ़ी संवेदना वाले होंगे एंड सर्विस ओरिएंटेड, आप दूसरों की मदद करने के लिए होते हैं। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, आप एम्पैथी में आप हाई स्कोर करते हैं, देन यू आर sensitive to others and service oriented. Some strategies to develop empathy. How can develop our empathy? How can we develop our empathy? So we can use some strategies. By using some strategies to develop, we can develop our empathy. First is watch your body language. First of all, we should know our body language. वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है, देखना है, या अपने साथ साथ दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को भी समझना है. फिर एक्टिवली लिसन. एक्टिवली लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर काउंसलिंग ऑल्सो. अगर हम एक एग्जांपल ये दिया जाता है कि अगर आप किसी के परेशानी को या किसी के दुख को सिर्फ सुन लेते हैं तो उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. इसलिए हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए. अगर हम इजी वे में उनकी बातें सुन लेते हैं तो सिर्फ कहने भर से उनका आधा दुख कम हो जाता है. एंड थर्ड इज पुट योर सेल्फ इन देयर शूज बिफोर जजिंग. ये कहावत भी है कि किसी को जज करने से पहले उसकी जगह पर होकर देखो, या पुट योर सेल्फ इन देयर शूज बिफोर जजिंग. जब हम किसी परिस्थिति में, दूसरे की परिस्थिति में खुद को रख के सोचते हैं, तब हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उनको ज़्यादा सही तरीके से जज कर पाते हैं. तो एम्पैथी का ये एक कह सकते हैं कि एक टूल है कि हम पुट योर सेल्फ इन देयर शूज बिफोर जजिंग, किसी दूसरे को जज करने से पहले उसकी जगह पर होकर देखें. एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पीपल वाचिंग. लोगों को देखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए. पीपल वाचिंग, लोगों को समझने की, देखने की हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे हम चीज़ों को समझ पाएंगे. एंड बी सोशली प्रेजेंट. सोशली, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, सोशल बीइंग, सो वी कैन be socially present. And the next is social skills. It's also known as a relationship management. A person with high level of emotional intelligence may be better at interacting appropriately with others than a person with low levels of emotional intelligence. Social skills, also known as relationship management, it's a building relationship includes various skills such as influence, leadership, developing others, communication, change catalyst, conflict management, building bonds, teamwork, and collaboration. It often taps into your abilities in the first two emotional intelligence skills: self awareness, self management, and social awareness. It is the bond you build with others over time. Okay. Emotional intelligence can help a person build relationship, communicate with others, and maintain friendship. It's also ability to manage, influence, and inspire emotions in others. It is the ability to find common ground and build rapport. If you scored high in relationship management, then you are able to handle emotions in relationships, able to influence and inspire others.
Your fosters teamwork and collaboration. Some common strategies to develop relationship management. First is be open and curious. हमें खुले विचार वाला और उत्साहित होना चाहिए। मतलब लोगों का जैसे वेलकम, सेंस ये है कि लोगों को वेलकम करना चाहिए, लोगों से मिलने जुलने में हमें ओपनली होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। टेक फीडबैक वेल, अपना फीडबैक लेते रहें। बिल्ड ट्रस्ट, विश्वास बनाए रखें, विश्वास करें, भरोसा रखें। देन एक्नॉलेज द अदर्स पर्सन्स फीलिंग्स, और दूसरों के फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करें, समझें। टैकल ए टफ कन्वर्सेशन, ऐसी बातों से बचें जिनसे जिन बातों का किसी को बुरा लग सकता है या जो कठोर बातें हो सकती हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। देन रिमेंबर द लिटिल थिंग्स दैट पैक ए पंच। People who manage relationship well are able to see the benefit of connecting with many different people, even those they are not fond of. Solid relationships are something that should be sought and cherished. They are the result of how you understand people, how you treat them, and the history you share. Strategies to develop relationship. It's we can avoid giving mixed signals. Work to build trust with others by keeping your word, being dependable, and being reliable. Be honest and communicate boundaries. Set realistic expectations for yourself and others. Acknowledge other people's feeling. Now we will talk about some historical background of emotional intelligence. Emotional intelligence did not become popular as a term until around 1990, and interest has grown vastly over the last 30 years. The concept of emotional intelligence was popularized by Daniel Goleman in his book Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. His book was based primarily on the work of two psychologists, John Mayer and Peter Salovey. As early as the 1930s, psychologist Edward Thorndike described the concept of social intelligence as the ability to get along with other people. During the 1940s, psychologist David Wessler proposed that different components of intelligence could play an important role in how successful people are in life. In the early days of emotional intelligence, the Harvard Business Review held it as one of the most influential business ideas that is groundbreaking and paradigm setting. Today, the term sits proudly at the intersection of management and psychology and has become one of the most important skills in every professional list. But how did the term get conceived and conceptualized? How has it journeyed through the research journals to popular literature? Well, let's find out. The factors falling under emotional intelligence were first discussed under social intelligence, the term with which emotional intelligence later combined to form the all encompassing term emotional and social intelligence. The term social intelligence find mention first in 1909 in the works of John Dewey, an educational philosopher. He defined social intelligence as the power of observing and comprehending social situations in moral principles in education. In the early days of emotional intelligence, Harvard Business Review held it as one of the most influential business ideas that is groundbreaking
and paradigm setting. Today, the term sits proudly at the intersection of management and psychology and has become one of the most important skills in every professional's list. The factors falling under emotional intelligence were first discussed under social intelligence, the term with which emotional intelligence later combined to form the all encompassing term emotional and social intelligence. After that, Edward Thorndike used the term social intelligence in 1920 in an article Intelligence and its Uses in Harper's Monthly magazine. For someone who initially disliked his first psychology course, eventually being known as the father of modern educational psychology must have been an interesting journey. His interest in psychology grew after reading the classic book The Principle of Psychology by William James Thorndike, an educational psychology professor at Columbia University, defined it as the ability to understand and manage men and women, boys and girls, to act wisely in human relations. Then in 1940s, researcher David Wessler recognized the effect of multiple factors on intelligent behavior and suggested models of intelligence would be incomplete until all those factors were fully gauged. He defined intelligence as the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. He talked strongly about non intellectual elements, affective, personal, and social, being essential for predicting one's ability to succeed in life. While these researchers had been preparing the ground for conception of this term, the first mention of the term emotional intelligence is attributed to Michael Baldock, a clinical professor of psychology in psychiatry at Cornell University, who coined the term for a 1964 research paper, Sensitivity to Expression of Emotional Meaning in Three Modes of Communication. Subsequently, it appeared in 1966 in a paper by a German psychiatrist Hans-Gott Luhner titled Emotional Intelligence and Emancipation, published in Psychotherapeutic Journal, Practice of Child Psychology and Child Psychiatry. Next, turning point in the journey of emotional intelligence came with Howard Gardner. I repeat that next turning point in the journey of emotional intelligence came with Howard Gardner. In 1983, Gardner talked about theory of multiple intelligences in his book Frames of Mind, though the seeds of the concept were already there in his 1975 book The Shattered Mind. In the set of seven, Gardner discussed two personal intelligence, whose scope turns out to be extremely similar to emotional and social intelligence. These two personal intelligence were interpersonal intelligences, that the ability to access and make use of one's own feelings, and interpersonal intelligence, the ability to notice and make distinctions about the moods, temperaments, motivation, and intentions of other people. Then, in 1985, the term emotional intelligence first appeared in an unpublished doctoral dissertation of an American researcher Van Pine titled A Study of Emotion, Developing Emotional Intelligence, Self Integration Relating to Fear, Pain, and Desire. It's a theory structure of reality, problem solving, contraction, expansion, tuning in, coming out, and letting go. More so,
An important development took place in 1987 when, in an article in Mensa magazine, Keith Paisley first used the term EQ. EQ means emotional quotient, though Rowan Barr on claims to have used the term in an unpublished version of his graduate thesis. However, 1990 became an important year for emotional intelligence. 1990 became an important year for emotional intelligence when John Mayer, a professor at the University of New Hampshire, and Peter Salovey at Yale published their landmark article Emotional Intelligence in the journal Imagination, Cognition and Personality. It was first serious academic inquiry of the term as they focused attention on a set of abilities rather than traits. In their model, Mayer and Salovey discussed emotional intelligence in terms of four branches, that is, perception, identification, appraisal, and expression of emotion. Using emotion to facilitate thinking, understanding, and comprehending emotions, reflective regulation, and management of emotions. Then, in 1990s, in an event that proved to be a watershed in the history of emotional intelligence, psychologist and New York Times science writer Daniel Goleman, who knew of Mayer and Salovey's work, asked their permission to borrow their model and use the name emotional intelligence for a book. Goldman had earlier written two books and had been writing a regular column for lay readers of psychology at the New York Times. Well, it was with the release of his 1995 book Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, that emotional intelligence captured the imagination of management, fraternity, and laymen alike. It became an all time bestseller and played the all important role in popularizing the concept. He gave a framework of emotional intelligence with four components, that is, self awareness, self management, social awareness, and relationship management. Later, through his another landmark book, Social Intelligence, The New Science of Human Relationships, published in 2006, Daniel Goleman laid yet another important development in the history of emotional intelligence. He divided the four components of his former concept of emotional intelligence into two sets and claimed that while emotional intelligence is about self awareness and self management, the social intelligence is about social awareness and relationship management, which he gave an alternate term, social facility. This led to the formal formulation of emotional and social intelligence, the parent concept and skill set, which transformed into its current mature construct as its two constituting concepts and terms, journeyed through the annals of psychology and management, and finally came together for good. Then we can say that emotional intelligence is the ability to perceive and express emotion, assimilate emotion in thought, understand and reason with emotion, and regulate emotion in self and others, which according to which tell the Mayer and Salovey, which definition is given by Mayer, Salovey, and Rousseau. In own words, we can say that it's our ability to recognize and understand emotions in ourselves and others, and our ability to use this awareness to manage our behavior and relationships. So, we will discuss tomorrow. And next point, continue, Miss Neha.
Well, that was such a comprehensive. Thank you so much, sir. It was such a comprehensive and such a wholesome concept of emotional intelligence that was taught by you. और हमने कितने अच्छे से समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, है ना, और इसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं. एंड मोर ओवर, सिर्फ components ही नहीं, we learned that what are the strategies that we could, apply in our lives to imbibe those components, है ना. तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग ज्यादातर इन टूडेज वर्ल्ड वी यूजुअली फोकस ऑन द इंटेलिजेंस, द IQ, इंटेलिजेंस लोगों की कि जो जितना इंटेलिजेंट है हम उसको आंकते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, है ना, कि कोई अगर इमोशनली कितना केपेबल है, हम उसको यूजुअली आज की दुनिया में वी डोंट कंसिडर सच पीपल. लेकिन इन द लॉन्ग रन, students and whosoever has joined, always remember in the long run it is your emotional quotient जो हमको और ज्यादा आगे लाइफ में ले जाएगा. आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो एक लिमिट तक तो आपको लाइफ में आगे ले जाएगी. इट विल हेल्प यू विद योर आंसर्स, है ना. जब आप आंसर्स लिखोगे क्वेश्चन पेपर्स में, एग्जाम्स हो गए, है ना, उस सब में आपका जो इंटेलिजेंस है वो तो काम आएगा. लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है जो आपकी, है ना, इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, व्हेन यू एंटर द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, उसमें जो आपका काम आता है, दैट इज योर इमोशनल क्वोशंट, बिकॉज इट टेल्स यू हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी, हाउ यू हैव टू कैरी योरसेल्फ, है ना. हमारे खुद के अंदर क्या हमारे व्हाट आर आवर वीकनेसेस, व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, हमारे खुद के इमोशंस हम कैसे हैंडल करेंगे, है ना. तो इंटेलिजेंस तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ही हमारी लाइफ का, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, कंप्राइजिंग ऑफ हाउ वी अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस एंड हाउ वी अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स इमोशंस. इसमें जो हमने क्वालिटी पढ़ी एम्पैथी की, एम्पैथी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. वी यूजुअली डिस्कस अबाउट सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी और एम्पैथी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सिंपैथी इज जस्ट यू फील फॉर द अदर पर्सन, कि अच्छा कुछ बुरा हुआ, हम उसके लिए बुरा फील करें, अरे हो गया ऐसे. लेकिन एम्पैथी इज व्हेन यू कीप योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स शूज. तो व्हेन यू कीप योरसेल्फ, जब हम अपने आप को दूसरे के दुख में रखते हैं, दूसरे की मुसीबत कोई है ना, ही और शी इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ, हम अपनी जगह जब रखते हैं इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तब हम जो एनालाइज कर पाएंगे दूसरे इंसान का दर्द, दूसरे इंसान के क्या भाव हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, and then the support, the care that we would provide, that would be on another level, है ना. तो ये जो सर ने हम लोग को आज जो कंपोनेंट्स पढ़ाए, है ना, ऑल दीज कंपोनेंट्स, ऑल दीज स्ट्रैटेजीज, आई रियली होप एंड एक्सपेक्ट कि आप लोग सब अपने लाइफ में यू वुड बी imbibing these strategies, imbibing these qualities, because it's something very essential in today's world. And thank you so much everyone for joining today's class. Here we come to an end with it. Or today, I mean, sorry, tomorrow again we'll come up with another concept, और वो सर ही आपको पढ़ाएंगे. Right? So have a great day. Thank you so much everyone. Take care. Bye.